Hello, my dear students. So please do hurry and join our live class so that we can start our live session. आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए इस लाइव क्लास में. चलो बच्चों जुड़ जाइए आप लोग जल्दी से. और आज हम करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस सॉल्ट, उसका पार्ट 4. ओके, सो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, देन वी कैन स्टार्ट आवर क्लास. जल्दी से जुड़ जाइए. Please do hurry and join our live class so that we can start our class. Today we will discuss about the acid base salt. Basically today we will discuss about the bases, because in previous classes we have already discussed the acids and what are acids, what are the what are the properties of your acids. We have already discussed. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली ये बेस के बारे में. ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए. Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Sorry, a very good evening to all of you and welcome to the another live class of Eduins. Okay, आप सभी लोगों को बहुत स्वागत है हमारा लाइव क्लास में. तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एसिड बेस और सॉल्ट, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे थे. आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट 4. यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ना, बेस क्या है, बेसिस, व्हाट आर द बेसिस, एंड सॉल्ट वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द सॉल्ट. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये बेसिस के बारे में. ठीक है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए इस क्लास में. एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास we would like to introduce our Eduins, that our Eduins teach not only your CBSE but also the West Bengal board, that is WBBSE for the class 9 and class 10 and the CBSE for class 10. As well as we are launching the digital batch for Madhyamik 2027 for the West Bengal students, and those who are West Bengal from the West Bengal board, they can access, they can purchase these digital batch or enroll in this digital batch to get your preparation, to get your Madhyamik 2027 preparation very well. Okay, so यहाँ पे आप लोग क्या पा सकते हैं.
You will get here the whole recorded video classes in every chapter, every important topics. Beside that, you will get the complete access of our Eduins application, where they can practice the question like MCQ, like LAQ, like SAQ, fill in the blanks, true, false, etc. And as well as you have also get the MCQ test from each chapter. That's how you can check your preparation, your exam preparation in your exam. Okay, and there have also the opportunity for the class 11 students, class 11 semester 1, who are pursuing the Madhyamik 2026. Okay, who have already passed or who have already done the Madhyamik 2026. They can enroll for the class 11 semester 1 in our YouTube channel, that is Eduins Higher Secondary. Okay, and we have already launched the classes, the batch for the paid batch, of course, for the class 11 semester 1 student who are interested for enroll these classes. They are welcome. Okay, Radhesham. Hi Radhesham, you are new, so please do subscribe our channel Eduins CBSE, and also don't forget to join our Telegram channel to get the daily live class updates. Okay, ठीक है राधेश्याम? चलिए, और एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि ये जो रविंद्र जयंती आ रहा है, एक ऑनलाइन कंपटीशन हम लोग अरेंज कर रहे हैं एडविन्स की तरफ से. ठीक है, ये है एक ऑनलाइन कंपटीशन. ठीक है, ऑनलाइन कंपटीशन है जहां पे आप लोगों को रजिस्टर करना है थ्रू द Google form through our registration link which have already provided in the comment section. Okay, so comment section में जो registration link है वो दे दी गई है, तो आप लोग वो लिंक से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. यहाँ पे कौन कौन सा कैटेगरी है? फर्स्ट है आपका ड्राइंग, देन योर डांस, देन द singing, then your elocution, and lastly the recitation. And the end date for the registration is 7th of May, and end date of submission your content is 8th May. Okay, so don't forget the deadline, don't forget the last date. The 7th May for the registration is the last date of registration, 7th May, and the last date of your submission, your content is 8th May. Okay, clear? यहाँ पे कौन कौन सा कैटेगरी है? फर्स्ट है ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, इलोक्यूशन एंड योर रिसाइटेशन. ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि व्हाट आर बेसिस. आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिस क्या है. तो व्हाट आर बेसिस? बेसिकली we will know that bases, that substance which neutralize the acids. So bases are the substance those neutralize Okay, bases are the substances, of course, those neutralizes the acid. Okay, so we know that we will next in our topic this after this discussion we will talk about the pH. Already we have talked about the pH. हम लोगों ने पहले भी pH के बारे में बातचीत की है कि pH क्या होता है, कि pH एक स्केल है जो कि 7 से ज्यादा हो गए तो वो है बेसिस, एंड 7 से कम हो गए तो वो होंगे एसिड.
तो bases are the substance those actually neutralizes the acids. And what are the criteria for the bases, and what are the characteristics of bases, we will study next to it. Before that, there have two terms, that is bases and alkalis. What is the basic difference between bases and alkalis? The basic difference between bases and alkalis, that is those bases that dissolve or soluble in water. The bases are soluble in water called alkali. तो क्या है, जो बेसिस पानी में डिजोल्व होता है, ठीक है, जो बेसिस पानी में डिजोल्व होता है और पानी में सॉल्युबल होता है और पानी में घुल जाता है, वो बेसिस को हम लोग बोलेंगे क्या, कि alkalis. So there have a statement that is all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Explain it. क्या पूछा गया है यहाँ पे, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, जितने सारे एल्कलीज है वो बेसिस है, बट ऑल बेसिस, सारे बेसिस एल्कलीज नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ही बेसिस है जो कि पानी में घुल जाता है, ठीक है, कुछ ही बेसिस है जो कि पानी में घुल जाता है, वो जो बेसिस पानी में घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलीज. So those bases who can soluble, those are soluble in water, they are called alkalis, but all bases are not soluble in water. That's why all alkalis are not, that's why all alkalis are not bases, sorry, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? Clear? That is, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. What is the reason? Because the bases, those are soluble in water, are called alkalis, but all alkalis, all bases are not soluble in water. That's why all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Clear? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो एल्कलीज हैं उसका एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। पहला एल्कलीज जो है उसका एग्जाम्पल्स, all bases are not, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis. So what are the reason, what are the examples of alkalis? पहला वाला एग्जाम्पल जो है वो है आपका NaOH। किसको पता है NaOH का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, पता है आप लोगों को, किसी को पता है NaOH का नाम क्या है? NaOH, इसका तो एक नाम है, क्या है उसका नाम?
बोलो। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जब पानी में घुल जाता है, ये एक अल्कली है, सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सो ये जब पानी में घुल जाता है तो ये आयनिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे? this sodium hydroxide break down into sodium and hydroxyl ion. This sodium hydroxide break down into sodium and hydroxyl ion. Okay. Clear? Sodium ion and hydroxide ion. Clear? So ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये पानी में घुल जाता है, दैट्स व्हाई दिस इज अ अल्कली एंड दिस इज आल्सो अ बेस, बिकॉज ऑल अल्कलीज आर द बेसिस। एंड यहाँ पे जो ब्रेक डाउन हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैसा हुआ है? सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। Okay, sodium ion and hydroxide ion. So this is the example of alkalis. It is the पहला वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। दूसरा वाला क्या हो सकता है? दूसरा वाला एग्जाम्पल हो सकता है कि KOH। ओके, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये पानी में घुलने के बाद ये भी आयन में स्प्लिट हो जाता है। कैसे? पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सो ऐसा ही और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक एग्जांपल हो सकता है MgOH होल 2। ठीक है, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ alkalis? These are examples of alkalis, these are examples of bases। क्या है? पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड तीसरा जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, लिख देता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? क्लियर? Clear everyone? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यहां से हम लोगों को एक चीज देखने को मिल रहा है, क्या? जो एल्कलीज है, जो बेसिस है और जो स्पेशली एल्कलीज है जो पानी में घुल जाता है, वो पानी में घुलने के बाद एक आयन, स्पेसिफिक आयन फॉर्म करता है। क्या है वो? है OH आयन। यहाँ पे भी OH आयन, यहाँ पे अगर स्प्लिट कर दे, यहाँ पे भी दिखने को मिलेगा Mg2 प्लस प्लस OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आयन
में स्प्लिट हुआ है। तो हमने जब पढ़े थे कि जो एसिड्स होता है, एसिड्स जो होता है वो पानी में घुलने के बाद क्या कौन सा आयन फॉर्म करता है? वो करता है हाइड्रोजन आयन, H+ आयंस। एंड जो एल्कलीज होता है वो पानी में घुलने के बाद कौन सा आयन फॉर्म करता है? वो है हाइड्रोक्साइड आयन। So this is basic properties of alkalis, not for all bases, because the bases which are dissolved or which are soluble in water, they are called alkalis, and the alkalis are able to split down into ions or positive and negative ions in water solution. They have only the property to splitting or break down into ions. Clear? Clear to everyone? है ना? सो यहां पे जो है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ही तय करेगा कि ये जो आपका एल्कली है, ये जो आपका बेस है वो कैसा होगा। चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। वी हैव ऑलरेडी लर्नड in case of your acid, that is strong acids and weak acids. What are the strong acids? Strong acids जो होता है वो पानी में घुलने के बाद आपका जो हाइड्रोजन आयंस होता है वो ज्यादातर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जो आपका वीक एसिड होता है वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। तो आपका जो बेसिस है, इन केस ऑफ बेसिस दिस इज ऑल्सो सिमिलर। हाउ? The strong bases actually produce large amount of OH ions. Okay, strong bases produces large amount of hydroxide ions. कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है वो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, और जो वीक बेसिस होता है वो कम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ये लेस है, ये लार्ज है, ठीक है। जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा स्प्लिट हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर NaOH को पानी में डाले तो वो सारे NaOH N+ एंड OH- में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसको पानी में डाले तो वो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन नहीं प्रोड्यूस कर पाते, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा आपका NH4OH, ओके, वो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। सो यहाँ पे जो NH4OH होता है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो ज्यादा आपका जो वाटर होता है उसमें रहता है, वो स्प्लिट डाउन नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये है वीक एसिड एंड weak bases, and this is the strong base. The strong base actually split down into ions and produce more or large amount of hydroxide ions. In case of weak bases, they produce actually less amount of hydroxide ions. Clear to all of you? सभी को समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस क्या होता है?
चलो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो बेसिस होता है इसका प्रॉपर्टीज क्या है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड. Now we will learn about the properties of the bases. So पहला जो ये property है, this is a physical property, that is bases have bitter taste. Okay, so पहला वाला जो property है कि bases जो होता है वो bitter taste होता है. ठीक है, उसका taste जो होता है वो है bitter. Now the second point, this is also a physical property, that is the bases feel soapy touch. They touch slippery. When you wash your hand through the hand wash or hand soap, or you may put the detergent in your hand, it feels slippery. Okay, so this is the property of a base, that is they feel soapy touch or slippery. Okay, they feel slippery. Now the third point, this is also a physical property, that is bases turn red litmus to blue. In case of acid, the blue litmus turn into red, but in case of bases, this is exactly opposite. The red litmus change into blue color. ठीक है, इसके बाद क्या है, bases conduct electricity in solution. Of course, the bases who can dissociate or who can split down into ions, they can of course conduct the electricity through the OH minus ions. Okay, they can conduct the electricity through the ions. Clear? Clear? Of course, इसके साथ जो आपका OH आयन के साथ जो भी पॉजिटिव आयन होता है उसके वो भी पार्टिसिपेट करेगा इसमें. नेक्स्ट है बेसेस रिएक्ट विद द मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. चलिए देखते हैं, ये है हमारा एक केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो केमिकली आफ्टर रिएक्शन जो हम लोग देखते हैं कि जो चेंजेस होता है उसको कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी. ओके, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो फिजिकली विजिबल है और हम लोग फील कर सकते हैं. जहां यहाँ पे जैसा कि सोप फील्स स्लिपरी और सोपी. ठीक है, ये टेस्ट जो होता है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है. तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट 5 में बोला गया है कि जो बेसिस होता है वो रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पे एक कॉमन जो बेस होता है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको लेके हम लोग चलेंगे. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर जिंक को मिला दिया तो क्या मिलेगा. यहाँ पे किसी को पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर जिंक को मिला दी तो क्या मिलेगा? एनी आइडिया? पता है किसी को? चलिए चलिए, किसी को पता है ये अगर जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक को मिला दी गई तो क्या मिलेगा, क्या रिएक्शन होगा? एनीवन? नो वन हियर. ओके, चलिए, अगर आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक को मिला दी तो यहाँ पे एक सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे और एक चीज जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे लिखा है क्या,
हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है? यहाँ पे देखो NaOH के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा, रह जाएगा क्या? Na सोडियम, देन जिंक, देन O। यहाँ पे होगा सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है? सोडियम ठीक है, सोडियम जिंकेट। सो यहाँ पे सोडियम जिंकेट के साथ क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस। दिस इज द कॉमन। Your bases react with the metals and produce the hydrogen gas. Clear to all of you? Now, the sixth point, that is the bases react with acids and to form salt and water. Okay, bases react with acids to form salt and water. चलिए ये भी देख लेते हैं। हमारा जो कॉमन एसिड है NaOH को रख देते हैं यहाँ पे रिएक्शन के लिए, इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है? पहला वाला नाम जो भी हमारा दिमाग में आ रहा है वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, NaOH के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दी गई, तो क्या मिलेगा इसमें? क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा वो होगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो चलिए यहाँ पे जो सॉल्ट क्या है होगा वो तो हम लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जो पानी प्रोड्यूस होगा उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे पानी हो गया। ठीक है, सो बच क्या गया? यहाँ पे बचा है आपका सल्फेट। ठीक है, यहाँ पे बचा है सल्फेट, और यहाँ पे देखो Na। ठीक है, यहाँ पे Na और यहाँ पे सल्फेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो NaOH होता है वो स्प्लिट डाउन हो जाएगा Na प्लस एंड OH माइनस। यहाँ पे भी ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी स्प्लिट डाउन हो जाएगा H प्लस आयन एंड सल्फेट SO4 माइनस आयन। सो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा सॉल्ट वो होगा आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, जो प्रोड्यूस होगा वो होगा क्या? सोडियम सल्फेट Na2SO4। यहाँ पे अगर स्प्लिट डाउन करके दिखाऊं तो Na प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ पे होगा H प्लस प्लस SO4 माइनस। यहाँ पे OH जो होगा वो पानी में चला जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा आपका सोडियम एंड सल्फेट, जो मिला के होगा सोडियम सल्फेट सॉल्ट, जो कि है एक सॉल्ट। क्लियर? Now the seventh point, that is the bases react with non-metal oxides to form salt and water. Okay, तो bases जो है वो एसिड के साथ भी मिल के बना रहा है क्या? सॉल्ट, नमक और पानी। और जो नॉन मेटल्स होता है उसके साथ भी मिला के क्या बना रहा है? वो बना रहा है आपका सॉल्ट, नमक एंड पानी। ठीक है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले ले तो क्या होगा? नॉन मेटल ऑक्साइड, एनी आइडिया? नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है? जो मेटल, सोडियम एक मेटल है। ठीक है, यहाँ पे लेना है नॉन मेटल ऑक्साइड। सो नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल क्या होगा? बताओ बताओ, नॉन मेटल ऑक्साइड। ऑफ कोर्स
the common example, that is carbon dioxide, that is the non-metal oxide. इसके साथ अगर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला दी जाए तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? पहला जो होगा वो है आपका पानी, ठीक है। पहला जो प्रोड्यूस होगा आपका वो हो जाएगा आपका पानी, दैट इज H2O, और यहाँ पे बच जाएगा आपका कैल्शियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो मिलके तैयार करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया, ये था हमारा जो बेस जो होता है उनका प्रॉपर्टीज। ये 7 प्रॉपर्टीज आपको याद करना पड़ेगा। पहला कि ये बीटर टेस्ट होता है, ये सोपी और स्लिपरी इन टच, दे टर्न द रेड लिटमस इनटू ब्लू, they can conduct electricity in solution, they react with metals to form hydrogen gas, they react with acids to form salt and water, and also they react with non-metal oxides to form salt and water. These are the 7 properties mixing the physical and the chemical properties. ठीक है, चलिए यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं कि यूजेस ऑफ बेसिस, बेस का एप्लीकेशंस क्या होता है, कहां पे बेस यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस इज यूज्ड to manufacture the soap, paper and synthetic fiber. The synthetic fiber that is known as rayon, ठीक है, which is known as rayon। तो इसमें आपका जो बेसिस होता है वो यूज होता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो ये जो बेस होता है मैन्युफैक्चरिंग में आपका सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, इसमें कौन सा बेस यूज होता है? बेसिकली यहाँ पे जो यूज होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है, यहाँ पे होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज। सो ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, calcium hydroxide. Now the third one that is used as an antacid, so we know we feel acidic after a heavy lunch or after a heavy meal. So when the stomach acid amount increases, the stomach pH get disbalanced. So to balance the pH, we take the antacids. Antacids are nothing but basically the bases which neutralize the stomach acid. The example of base which used as an antacid, that is magnesium hydroxide, ठीक है, magnesium hydroxide. Now the fourth one that is used as your washing soda, The example of the washing soda, the example of the base that is used as washing soda, that is sodium carbonate, Na2CO3, sodium carbonate. And the fifth one, that is the baking soda, baking powder and fire extinguisher, where we use the sodium bicarbonate, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। तो ये है आपका बेस जो होता है उसका यूजेस, उसका एप्लीकेशंस। ओके, now talk about the pH. What is pH? pH is nothing but the scale where the pH 7, which is
known as the neutral pH, and the left side, that is when the value get down. How? From 7 to 6, 6 to 5. These pH denoted the acidic pH, and when the value get increases, that is 7 to 8, 8 to 9, these values are known as the basic pH. And the basic pH and acidic pH are also categorized into two types, that is weak and strong. From 6 to 3, they are known as weak acids, and from 2 to 0, they are known as from 6 to 3, they are known as weak acids, and from 2 to 0, they are known as strong acids. Similarly, from 8 to 11, they are known as your weak bases, and from 12 to 14, they are known as strong bases. ठीक है? Okay? सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो पीएच है वो हमारा रेगुलर लाइफ में उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, पीएच इन आवर डेली लाइफ. सो यहाँ पे एक कॉमन एग्जांपल होता है कि टूथपेस्ट. Toothpaste, which is basic in nature. Why? Because the bacteria present inside our mouth, they produce the acids. To neutralize these acids, the toothpaste is basic in nature, and it will clean your mouth, it will clean your teeth, it will clean your entire buccal cavity and protect your tooth, protect your mouth. Okay, so this is the first application. Secondly, we are using the bases or your soap, your detergent for the cleaning agent. Okay, cleaning agent. So we are also use the acids for the cleaning agent, cleaning the bathroom, cleaning the other your appliances. But base and acid both are used as cleaning agent. Clear? Also, for reducing the acidity of the soil, of garden soil, of agricultural soil, we are using the bases. Which bases? That is calcium hydroxide. Okay, calcium hydroxide, calcium oxide or calcium hydroxide for reducing the acidity of soil. Okay, now the fifth application, that is the calcium carbonate. You have already know that calcium carbonate, that is used for the reducing calcium carbonate, which is used for to reducing the water pH. We know the pH of the rain, pH of the rain is slightly acidic, that is 5.3. Okay, 5.3, 5.4. So when the rainwater get contact with the pond, get contact with the river, or drop down to the pond, drop down to the river, the pH of the river, the pH of the pond decreases. Okay, it become acidic. But in this acidic environment, the organisms like your plants, like fishes, like other organisms cannot survive. That's why the calcium carbonate, that is a base, used as a reducing agent, acid reducing agent, and to neutralize the pH. Clear? Also, they have a self-defense mechanism by various organisms. Like in case of bee, their sting releases acid, whereas the wasp
दे रिलीजेस द बेस। ओके, वेस्ट जो होता है वो भी आपका स्टिंग के थ्रू आपको बाइट करता है, बी जो होता है वो भी स्टिंग के थ्रू बाइट करता है, बट in case of B they releases the acid, in case of wasp they releases the base. And also in case of plants they have also needle like injection which is actually releases the methanoic acid. Okay, आप कोई भी आपका जो क्रॉलर्स है, ठीक है, जो क्रॉलर्स है दैट इज बॉटल ग्राउट, दैट इज योर पंपकिन, उनका जो स्टेम होता है वो थोड़ा सा स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर रहता है उनका स्टेम में, ठीक है। वो स्पाइनी लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है और जो नीडल शेप स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रक्चर एक्चुअली रिलीज करता है मिथानोइक एसिड। व्हेन यू कैच द प्लांट you will feel the pain. Why? Because they releases the methanoic acid which actually get inserted to your skin and it will irritate. It will feel the pain. Clear? So these are the uses of pH in our daily life. ठीक है, चलिए तो और एक बार ये अनाउंसमेंट चलो कर देता हूं कि हमारा जो ऑनलाइन कंपटीशन है, जो रविंद्र जयंती है, जो आपका द ग्रेट पोएट, द ग्रेट लिटरेचरिस्ट दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, उनका बर्थडे पे यहाँ पे एक एडविन्स की तरफ से एक ऑनलाइन कंपटीशन का अरेंज किया हुआ है, जहां पे आप लोग यहाँ पे 5 कैटेगरी में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या क्या है कैटेगरी आपका? पहला वाला है ड्राइंग, दूसरा डांसिंग, तीसरा सिंगिंग, देन इलोक्यूशन एंड द फिफ्थ वन दैट इज रिसाइटेशन। सो क्या क्या है? ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, इलोक्यूशन एंड द रिसाइटेशन। और ये जो करना है आपको थ्रू रजिस्ट्रेशन, पहला जो एक रजिस्ट्रेशन लिंक देखिए कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां पे आपको पहला रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप लोगों के पास एक सबमिशन लिंक जाएगा जहां पे आप लोग ये वीडियो और पिक्चर कैप्चर करके आप लोग भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी होगा उसके लिए ऑफ कोर्स एक आपका हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट एंड एक्साइटिंग सरप्राइज गिफ्ट उनके जो एड्रेस है वहां पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट बिकॉज द रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। यहाँ पे कोई चार्जेस अलाउड नहीं है, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है 7th of May एंड सबमिशन का लास्ट डेट है कि 8th of May। सो जल्दी कीजिए, जो यहाँ पे जो आपका अपॉर्चुनिटी है वो छूट ना जाए, ठीक है। चलिए, तो आपका टुमारो का जो क्लास है वो है मैथ क्लास, जो आप लोग यहाँ पे एडविन सीबीएसई चैनल में देख सकते हैं। तो टाइमली आप लोग ज्वाइन हो जाइए इस मैथ क्लास में, ओके। एंड चलिए आज के लिए इतना ही। इसके साथ हम लोग जो एसिड बेस सॉल्ट का जो चैप्टर था वो हमने खत्म करे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कोई चैप्टर। उसके लिए आप लोगों को ऑफ कोर्स you have to see the live and you have to notice or you have to keep your eyes on in our channel Eduins CBSE. Okay, till then, good luck and wish you all the best. Stay safe, stay healthy. Thank you everyone. Bye.